growth की one of the important elements is a financial market and a well functioning financial market. पूरी दुनिया में ये हुआ है और माशाल्लाह ये होना भी चाहिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट कैसे तरक्की कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है और उसमें क्या बेहतर हो सकता है। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ आती है कि स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर रही, बल्कि अब तो लेटेस्ट जो न्यूज आई है वो अभी पाक सुजुकी भी विड्रॉ कर रही है मार्केट से। लॉट्स ऑफ पीपल आर विड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट। ये भी बड़ी खदशे की बात है कि मार्केट से लोग विड्रॉ कर रहे हैं एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। सेकेंडली, मार्केट रिमेन्स वेरी स्मॉल. It's like now 7 or 8% of GDP. I think it used to be 20% of GDP at its peak. So why is the market so small? Thirdly, मार्केट में कोई नई लिस्टिंग्स बहुत कम आती हैं, तो मेरे ख्याल साल में 1-2 कभी कभी आ जाती हैं। इस साल तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं आई। फोर्थली जो चीज है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स बहुत छोटे हैं। और मैं अपना पर्सनल बता दूं कि मैंने कोशिश की है 2 दफा अकाउंट खोलने की। अकाउंट को खोलते खोलते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, जो कि बड़ी मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि मेरी बेटी के साथ अकाउंट खोलने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं खोल सकते। पता नहीं हाउ कैन वी मेक दिस मार्केट ग्रो, बिकॉज क्वाइट फ्रैंकली वी डू नो that financial development is very important. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है नदीम साहब, that we have not probably reached where we should have reached by this time, but my colleagues, as I said, would explain on about the workings of the capital market and the investment opportunities. लेकिन it is also relevant, of course, to note that generally Pakistan is ranked poorly on financial inclusion ranking. पहली दफा जब आप investors को stake offer कर रहे होते हैं, so just to simplify, if it is a company, then the sponsors of the company would be divesting some of their shareholding to the general public for the first time. So that would be considered as a primary market activity. Once that the shares of that company are offered to the general public, तो general public के लिए एक prerequisite है कि जब आप general public को involve कर रहे हो तो उनके पास entry और exit का freedom होना चाहिए. That liquidity is provided by a stock exchange. और अगर वो लिक्विडिटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना। Let's begin, Ji. This is the PIDE webinar. My name is Nadeem Haque. We want to hear from SECP today. Let me first say that I've got an honorary guest here too, Shahid Kardar, who's also going to be participating with us. Everybody knows Shahid. He's been the governor of the State Bank and a well-known economist. So he's going to be here too. That'll enrich the discussion and hopefully make us understand things more. So let me welcome the people from the SECP. I mean, it's a great honor to have SECP Executive Director Musarat Jabeen Sahiba, Director Asif Iqbal Sahib, and Sajjad Ali, Additional Director SECP. So we've got 3 people from the SECP. Our objective in this webinar is to learn about the financial market in Pakistan. I think it doesn't need anything, in the sense कि किसी को भी नहीं इस पे शक होना चाहिए कि जो growth की one of the important elements is a financial market and a well functioning financial market. पूरी दुनिया में ये हुआ है और माशाल्लाह ये होना भी चाहिए। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट कैसे तरक्की कर रही है, कितनी तरक्की कर रही है और उसमें क्या बेहतर हो सकता है। मोटी मोटी बात जो मुझे समझ आती है, शायद यू कैन बट इन इफ यू लाइक, मोटी मोटी बात जो मुझे समझ आती है कि स्टॉक मार्केट ग्रो नहीं कर रही, बल्कि अब तो लेटेस्ट जो न्यूज आई है वो अभी पाक सुजुकी भी विड्रॉ कर रही है मार्केट से। लॉट्स ऑफ पीपल आर विड्रॉइंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये भी एक बड़ी क्या कहते हैं, तो ये भी बड़ी खदशे की बात है कि मार्केट से लोग विड्रॉ कर रहे हैं एंड वी शुड थिंक अबाउट इट। सेकेंडली, मार्केट रिमेन्स वेरी स्मॉल. It's like now 7 or 8% of GDP. I think it used to be 20% of GDP at its peak. So why is the market so small? Thirdly, मार्केट में कोई नई लिस्टिंग्स बहुत कम आती हैं, तो मेरे ख्याल साल में 1-2 कभी कभी आ जाती हैं। इस साल तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं आई। नई लिस्टिंग का मतलब कि नए लोग मार्केट में आ रहे हैं। फोर्थली जो चीज है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स बहुत छोटे हैं। और मैं अपना पर्सनल बता दूं कि मैंने कोशिश की है 2 दफा अकाउंट खोलने की। अकाउंट को खोलते खोलते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ती है, जो कि
बड़ी मुश्किल है। दूसरी चीज ये कि मेरी बेटी के साथ अकाउंट खोलने की कोशिश की तो नगा नहीं खोल सकते, पता नहीं, तो मतलब फिर बड़ी मुश्किलों से खोल लिया, बट इट वाज टफ। एंड साथ साथ ये भी है कि डू वी नीड दिस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? अमेरिका में तो 1 सेकंड में खुल जाता है, बाकी दुनिया में भी खुल जाता है। तो आई थिंक कुछ हमें सोचना चाहिए कि किस किस्म की स्टॉक मार्केट। फाइनल थिंग दैट आई वुड से, स्टॉक मार्केट में कोई नई लिस्टिंग्स नहीं आती, देयर आर दिस आई वुड से, सॉरी, नए इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आते। तो इन सब चीजों पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। आवर पॉइंट इज प्योरली एकेडमिक, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि how can we make this market grow? Because quite frankly, we do know that financial development is very important. So इस हवाले से मुसरत बीबी, I'd like you to start and to address these questions and tell us a little bit. Then we'll have a little, let's have a discussion on this so that we can learn more from you. And finally, what I'd like you to do is to suggest topics to our students and to our faculty कि किन चीजों पे वो रिसर्च करें कि आपकी मदद करें कैसे मार्केट को बेहतर बनाया जाए, because as I said, this is probably just as important as the forge to have a good stock market. You need defense, you also need a good stock market. So to you, Musarat. Thank you, Nadeem Saab. Bismillahirrahmanirrahim. And of course, formally, first of all, on behalf of SECP, I would like to thank PIDE and Zahira in particular, Nadeem Saab, for taking this initiative and organizing this webinar, which was long overdue, and apologies for that. We somehow have not been able to, have this organized earlier. And मेरा ख्याल है कि Asif and Sajjad, जो मेरे colleagues हैं, both are connected. So they are the ones who are looking after the policy and regulation and investor site, जो IPO वाली site है. So they will shed some more light on what's happening these days. But broadly, मैं थोड़ा सा, I think because there were students involved and we were supposed to give a more of a presentation as to what SECP does, SECP का अपना structure क्या है, and what our roles and responsibilities are, how we are, managing or supervising the financial markets, the capital markets. So, thoda sa briefly in my speech, I had touched upon this. So, I would like to actually for of course not for Nadeem Saab and for Shahid Saab, who are the pioneers of I would say the financial segment में जो major reforms हुए हैं. So, not for you, but of course for the students and others who are connected with this this particular area. So broadly, मैंने तो उसको थोड़ा सा principally बहुत focus रखा था as to what financial markets are and what basically they comprise of the money market regulated by the State Bank of Pakistan, which includes the scheduled banks या जो microfinance institutions या DFIs हैं. And then the other part of the financial markets is the capital market, जिस पे आपने concerns भी show किए, it's not growing at the moment. So that is the area or the capital markets which the SECP regulates under the SECP Act of 1997. उसमें हमारे पास capital market के साथ corporate sector भी है, because we are a unique kind of a setup here in Pakistan with the SEC, that we are not just the regulator for the capital market, but we also have we are also the registrar of companies. So we regulate and register all the companies. And एक हमारा non-bank finance market का भी segment है, which includes the mutual funds, the insurance side भी हमारे पास है, mutual funds हैं. We have the non-bank finance के अंदर जी other instruments like the REITs, etc. So on insurance के साथ हमारे पास मुदारबाज भी हैं. So as such, SECP is responsible for the oversight of these different services and also the services other than these sectors जो कि financial sector में आती हैं, जिस तरह credit rating agencies हैं या securities brokers हैं. आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है नदीम साहब, that we have not probably reached where we should have reached by this time, but my colleagues, as I said, would explain about the workings of the capital market and the investment opportunities. Lekin it is also relevant, of course, to note that generally Pakistan is ranked poorly on financial inclusion ranking. ये हमारा एक probably otherwise भी एक issue है कि we don't save so much, हमारा saving rate is very low. Or at present, आपने तो number नहीं quote किए, but they are concerning to me as well, that they are about to 2,50,000 perhaps are there total investors in the capital market. And of course, the number of active investors is then much, much less even. इसी तरह, the level of penetration across the other asset classes that we regulate, जिसमें mutual fund भी है, industry और ये आपकी जो insurance industry है, ये भी है. They're also concerning because insurance industry की penetration is less than 1% at the moment.
So, but some of the reasons which are often cited for low retail participation in the capital markets is also the lack of financial literacy and investor awareness to alternative source of savings. क्योंकि as I said कि जी जब लोगों को पता ही नहीं होगा या जो रिफॉर्म्स का भी जितनी SECP ने की हैं जब वो मालूम ही नहीं होगा आपने बैंक अकाउंट और जो इसकी जो अकाउंट इन कैपिटल मार्केट ओपनिंग की बात की. To be very honest, I just opened an account last week with Bank of Punjab and I, not exaggerating, but I signed some 12 to 13 pages. But I was still okay with it क्योंकि मुझे ये था कि मैं बैंक में अकाउंट खुलवा रही हूँ और ये जरूरी चीज है. लेकिन हम जब 3 साइन अगर किसी कैपिटल मार्केट के में किसी ब्रोकर के साइन फॉर्म पे साइन करते हैं तो हमें बहुत कंसर्निंग लग रहा है कि जी हमने 4 जगह साइन किया, कोई लंबे फॉर्म्स थे, जी हमारा तो अकाउंट ही बड़ा लेट खुला. तो वी डोंट कंपेयर इट ऑल्सो विद द अदर्स जो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर है. मैंने यकीन करें मैं कह रही हूँ आपको तकरीबन 18 से 20 साइन किए होंगे एंड आई केप्ट ऑन साइनिंग. So in any case, so lack of financial literacy, I think, is one of the areas which is concerning, and also the lack of trust जो retail investor का है due to the past cases of broker defaults. Perhaps उसके बाद कितनी reforms आए हैं market में, but nobody knows them. But that's something which we've taken back, in जो हमारी memory में जो रहता है वो ये होता है कि इन brokers ने defaults किए हैं जी और ये बहुत बुरे लोग हैं. Also, alternative जो हमारा informal market जो exist करती है and asset classes जिस तरह real estate है या national savings हैं या फिर आजकल तो gold वगैरह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा है. People make investment in these and they, because उसके अंदर जो KYC requirements हैं they are less onerous and tax वगैरह भी आराम से उसमें evade किया जा सकता है. So these are some of the, I think, concerns that are typically associated with the low, trading in the capital market. But SECP ne, over the period has introduced a number of reforms to address these challenges, including reforms for enhanced risk management, good governance, transparency के हवाले से हम लाए हैं, improved disclosures हैं, IPOs जो है इतना facilitate किया है. These are all going to be discussed, and we have introduced a complete digitalization in the capital market operations. अब तो ब्रोकर भी सिर्फ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता है, ब्रोकर के पास आप अकाउंट ऑनलाइन खुलवा सकते हैं. So I believe my colleagues will touch upon these in their presentations. So hence I will not delve into these. Instead of, we'll briefly touch upon the digitalization के जो कुछ reforms हमने introduce किए हैं recently. And in particular, because as I said, because we are not just the capital market regulator, but we are the registrar of companies as well. So incorporation की drive को बढ़ाने के लिए जो हमने किए हैं उसमें you would appreciate कि SECP ने to facilitate company incorporation to automation, and हमने काफी streamline कर दिए हमारे processes which are of course aimed at reducing the overall time of starting of businesses in Pakistan. So resultantly, the number of registered companies are approximately मेरे ख्याल से 1,97,000 से ऊपर होंगी, but more than 99% of these enterprises of these companies are registered online. And तकरीबन 24% जो है वो जो we complete the registration on the same day. That is of course subject to provision of all relevant information. अगर information सी incorrect होती हैं या incomplete होती हैं तो then we cannot say कि जी we do the registrations within 4 hours or 5 hours. But there are also, but there is an immense need to provide, corporatization by identifying and addressing the bottlenecks that we, think that the corporate sector, अभी तो corporate sector की बात नहीं है, but the businesses हैं जो कि face कर रहे हैं. तो उनके लिए हमने एक कभी recently we've also constituted a committee, and Nadeem Saab has graciously volunteered to be part of that committee, and I'm thankful to PIDE. जिसमें हमने कहा है कि specific mandates हमने दिए हुए हैं for reviewing the current challenges and devising a roadmap for increasing the incorporations in Pakistan as such. So the findings hopefully of this committee will greatly be of help to us and to PIDE as well, and we can jointly work towards bringing those businesses towards more of a formal sector and a corporatized setup. So for inspiring entrepreneurs, if the students are here, I would want to mention that SECP has achieved end-to-end digitalization of incorporation, जिसमें मैंने आपको बताया कि digital certificates जो true copies होती हैं वो भी आप सारा online ले सकते हैं. बैंक के portal की verification के लिए हमने provide कर दिया. So any company which comes into for registration with the SECP, so उनके साथ-साथ बैंक account के बैंक जहाँ पर वो account खोलते हैं वहाँ पर directly information is provided to that those banks. So there's no duplication of work involved. A digital combined certificate of registration has been introduced, and all of this is digitalized.
हमने integrations वगैरह भी कर दिए with FBR and the EOBI and the provincial authorities. So everything is just digital, and integration with SME regulation जो portal है of SMETA उसके साथ भी हम connected हैं. So that's more of a one-stop shop. On the website of SECP अगर आप जाएंगे तो you can see the login for e-services. So e-services में जाकर you can set up a company from the comfort of your homes. आपको आकर फाइलें देनी नहीं पड़ेंगी, बिजनेस सेंटर का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा. और हमने गाइडलाइंस जो हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कर दी थी फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एज वेल. WhatsApp, WeChat, ये सारी चीजें अवेलेबल कर दी हैं फॉर ऑल्सो, एंड दे आर कनेक्टेड विद द स्टार्टअप पोर्टल दैट SECP हैज इंट्रोड्यूस्ड. हमारा एक, एज आई सेड, के डेडिकेटेड बिजनेस सेंटर भी है at SECP, and if somebody wants to really come in and want some more information, want some support in opening office, so that's a dedicated one which looks after company registration throughout the country. वो आपको हमारे CRO लाहौर, CRO कराची वगैरह कहीं पर जाना नहीं पड़ेगा. So I think this is a huge, opportunity for the youths in particular, in starting जो startup का ecosystem बनाने के लिए. And SECP is always ready and available for any help in this regard. So I believe it is also important to mention that SECP has also adopted an alternative approach towards regulation for encouraging innovation, really. Especially engaging the youth that have brilliant ideas. और हमने एक regulatory sandbox बनाया था in 2020, and after 4 cohorts that we've run, we have now made it open for the year around. पहले they were cohort basis पे, but now it's a year around that is open rather than cohort basis पे. So the purpose of sandbox primarily is to allow the innovators to experiment their products and services that are outside the scope of the regulatory ambit at the moment. But within a limited time frame, जब उसको test करते हैं, so then they can come into the mainstream and acquire those licenses that the SECP grants in BFC sector or the capital market side. So this in our view facilitates innovators to experiment in the real world and provide practical learnings for the regulatory developments. And you will also be pleased to know that successful जो experiments हमारे हैं, जो हुए हैं in sandbox, they've led to actually amendments in the NBFC regulations to enable the P2P lending and guidelines for digital distribution and robo-advisory and mutual funds regulatory framework. ये सारे जो हमने micro and digital insurers introduced किए, they've actually been part and experiments that we've, the lessons that we've learned through the sandbox. So, and equity crowdfunding के ऊपर काम हो रहा है. And also our innovation office, which was established to raise awareness about facilitations that the SECP extends to the startups and creates awareness about new development. They are proactively working with these NICs, and a number of webinars have already been held in coordination with these NICs. So this year we have widened the scope of and we will now be including raising awareness वाले कुछ की sustainability related areas in it as well, ESG related, जो global fintech related हमने भी अपने जो innovation office है, we will be working through the innovation office and bringing in more webinars on these areas. तो इन पर्सपेक्टिव ऑफ जो भी ग्लोबली इवॉल्विंग हमारा सस्टेनेबिलिटी एजेंडा है, आपको मालूम भी होगा बिकॉज वी मेड इट पब्लिक एज वेल कि हमने ESG पेपर, एक पोजीशन पेपर बनाया था इन 2022, एंड देन वी स्टार्टेड द कन्वर्सेशन अराउंड द ESG कंसिडरेशन. So you must have seen it on the social media. हमने दी हुई थी काफी चीजें. So there have been a lot of advocacy and capacity building sessions that we have held also in coordination with ICAP and with multilaterals. And we also plan to roll out the ESG guidelines, जो कि अभी तो खैर they are still in a draft form, but in the upcoming month, hopefully, we followed by an outline of national level जो dashboard, which we call ESG Sustain. So that ESG Sustain is going to be more of a centralized kind of a repository for all ESG related information, data, some capacity building tools वगैरह, ये investor centric जो facilitations हैं वो सारी इसके अंदर provide की जाएंगी. Holistically speaking, the role of regulator over the years has changed immensely. SECP has over the periods now tried to impress best practices, keeping in view the local demands and challenges. So in recent year, we have also moved into function based. हमने अपना in-house जो house in order लाना था उसको हमने किया. So we moved towards function based from a sector based regulation which we used to have.
So हमारा dedicated अब investor education का department है. We have centralized our supervision department and adjudication division वगैरह ताकि consistent and independent decision making हो सके. Licensing हमने एक जगह centralize कर दी है to bring in more efficiency. Also, you may be pleased to know that जो gender parity है, that has been also our key focus. So in addition to mandating gender representation on the boards of companies, internally SECP ने भी we've taken a number of measures in promoting gender diversity at workplace. Female in senior management positions जो हमारी हैं, they account for about 29%, I believe, 29%. And overall जो female का strength है, that has increased to 19%. So in order to foster inclusiveness, our trainee batch जो हम करते हैं, almost every year we hire these graduate trainees from different provinces. Female का ratio तकरीबन उसमें 49% है, which is really a very encouraging figure. So I believe that SECP as a forward-looking organization will continue to welcome talented professionals in our talent pool. And since I'm also addressing these students here, I would strongly encourage them कि जब वो अपने जो programs हैं when they finalize and if they are in the relevant field, they may apply the SECP का graduate training program. So in the interest of time, I think Nadeem Saab, I would like to conclude once again thanking you and PIDE in जिसके collaboration में we've organized this session, and I hope that this collaboration inshallah will continue in future for covering other sectors जो SECP के regulated हैं on mutual fund side, insurance side, etc. for the students here. And I would request and the other presenters to, in particular Asif and Sajjad, who've prepared their presentations for this occasion, कि वो capital market के हवाले से to address those areas जो आपके IPO related थे for the new listings and for bringing in more depth जो SECP ने जो awareness and जो reforms लाए हैं उनके ऊपर बात कर सकें. So over to you, Nadeem Saab. Thank you, madam. Thank you very much. That was very good. Ji, let's go ahead. Asif, I think so. Maybe the main question really is कि stock market from our point of view economics में देखते हैं कि what role is the stock market playing in terms of economic development? Is it a luxury or is it a necessity? And I think it's a necessity, and I think it's a very important form of financial. एक तरफ तो हमारे banks हैं. हमारे बैंक्स में कोई नहीं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कर जाता, गवर्नमेंट को लेंड कर रहे हैं, एंड स्टॉक मार्केट समहाउ डज नॉट सीम टू बी अ प्लेस ऑफ चॉइस फॉर इन्वेस्टर्स जो हैं यहाँ से इक्विटी से रेज नहीं करते पैसे फॉर न्यू कंपनीज, फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स. मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं करते, एंड आई थिंक दीस आर द क्वेश्चंस दैट वी शुड एड्रेस. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस स्टूडेंट्स नो द एलिमेंटरी थिंग्स अबाउट द स्टॉक मार्केट बिकॉज़ द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मोस्टली PhD students. So, Asif Saab, would you like to say something? Go ahead. Sajjad, do you have anything to say? Essentially, वो बात करती है. लेकिन we're not saying anything, not asking anything we don't know. The reality यही है कि वो हम सबको पता है कि मैं प्लॉट क्यों लेता हूँ और मैं गोल्ड क्यों खरीदता हूँ या मैं डॉलर में क्यों लेता हूँ. It's all about returns. At the end of the day, मेरे पास 100 रुपए है. And I have to invest where the returns are. जो returns दे रहे थे वो तो जा रहे हैं. They're trying to buy back their shares and moving away. So the question for us, I mean, I fully understand Asif Saab, Sajjad Saab would like to, Sajjad Saab would like to explain some of the things that for the students, please go ahead. But ये अगर अपनी presentation में नहीं डालते, but at some stage, we need to ask ourselves कि यार ये क्या है? I mean, why is it? Yeah, can we do something about the corporate sector जिसमें ना कोई float होता है, family owned है, वजह हम सबको पता है, उनको बैंकों से पैसे भी मिल जाएंगे, and the reason they will always remain family owned because वो उससे बेहतर तरीका कोई नहीं है to get your personal expenses being paid by the company. ये आपको मुझसे बेहतर पता है. So मेरे कहने का मतलब ये है कि the issue really is ये कहना कि जी सेविंग बड़ी लो है क्योंकि उसमें ये है, बट रिटर्न्स होंगे तो मैं चला जाऊंगा, मुझे आप रिटर्न देंगे तो मैं चला जाऊंगा. I mean, I as someone who I fancy myself कि मुझे छोटी मोटी को अंडरस्टैंडिंग है with the capital markets. Frankly, I'm being candid with you. I'm holding 2 shares
simply because I was a founding member of those two companies. I won't name them. Okay? And when I look around, barring one or two, just by, of course, I did buy shares of those, but then left the day I joined the State Bank. So मैं फिर उसके बाद वापस दिया नहीं. So मेरे करियर में the lack of trust जो आपने खुद highlight किया is not just lack of trust, it's also यार मुझे मिलेगा क्या? Sorry मैंने लंबी तकरीर कर दी, but essentially reinforcing the points to Nadeem साहब. जी सर, थैंक यू वेरी मच जी. अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. जैसा कि मैं मुसरत ने बताया, हमने स्टूडेंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार की जिसमें हम थोड़ा सा फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करेंगे कैपिटल मार्केट के. एंड देन आई विल सर्टेनली ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चंस व्हिच नदीम साहब रेज्ड एंड देन द कलीग हैव रेज्ड, बिकॉज़ दीस आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस एंड बेसिकली जो रियल इश्यूज हमारी मार्केट इस वक्त फेस कर रही है, आई थिंक उन्हीं की तरफ ये पिन पॉइंट करते हैं. So at the end, I will try my best to discuss these as well. So to begin with, I have a very brief presentation. So this is a very brief presentation in which we will discuss the importance of capital markets and have a very macro level view of the capital markets, how do they function. So what is a capital market? In simplest terms, a capital market is a market for securities, debt or equity, where businesses, enterprises, whether they become companies or governments, they can raise long-term funds from general public. Function-wise, the capital market can be segregated into two segments, the primary market and the secondary market. Primary market is a market in which the capital is raised, and the secondary market is where the listed instruments are traded. So, after taking a very macro level view of the capital markets, let's see the issue which has been raised before as well. What is the benefit of the capital market? So you see, capital markets are primarily used for capital formation. They provide the businesses a means to raise capital and serve as an alternative to fulfilling the capital needs from banks. All efficient economies use capital market extensively. This reduces burden and over-reliance for the banking segment, provide a more cheaper alternative, and also provide the general public a chance to become a stakeholder in a business with a potential. They can benefit from the good performance of the listed company in the form of dividend or in the rise or in the form of rise in the value of their investments. Capital market also serve another important function, which is unblocking savings. It provide a means for general public to contribute in the development of economy by channelizing these savings towards capital markets and towards raising of capital for new business. Capital market also provides investors a means to diversify their portfolio. You must have heard the expression, don't keep all your eggs in one basket. This primarily denotes the concept that one should not keep all his or her investment in one market segment and should aim to diversify the portfolio so that any downfall in one segment can be set off by the gains in another segment. And this also prevents from complete erosion of investment value. Capital market also provides secondary market benefits, which can be utilized in multiple ways, which suiting to the particular needs of each investor. So there are speculators in the markets, there are hedgers, there are arbitragers. Each has their own unique objective, which can be fulfilled by a vibrant and efficient capital market. If you take a look at the regulatory framework for the capital market, the primary law for the capital market is the Securities Act 2015, which was promulgated in 2015 and which basically replaced the earlier Security and Exchange Ordinance 1969. For the derivative market, we have the Futures Market Act 2016. The subsidy laws or the regulations formed hereunder, the key regulations are Securities Exchange Licensing and Operations Regulations and the Securities Brokers Licensing and Operations Regulations. And there are regulations for the licensing of the capital market infrastructure institutions. इसके बारे में हम थोड़ा सा अगली स्लाइड्स पे देखेंगे. If we see who are the participants of the capital market, primarily there are the issuers. These are basically the companies or the entities which want to raise funds from public through capital markets. They can be businesses and they can be governments also. Then there are the service providers which basically facilitate these issuers to raise capital and provide subsequent liquidity in the instruments of these companies or these entities. We have capital market infrastructure institutions, which include the stock exchange, central depository company, national clearing company. Then we have intermediaries which link these
institutions with the investors. These are primarily the securities brokers. And then there are the other service providers in this ecosystem, such as auditors, investment advisors, consultant to the issues, which help the issuers in raising capital and which also advise the general public on how to best interact with these intermediaries and capital market institutions. At the other end of the spectrum is investors, which provide capital from the pocket and which contribute to the liquidity of the capital markets. These can be individual investors and these can be institutional investors also. So we have repeatedly used the term the capital market infrastructure institutions. What are they exactly? Basically, first of them is obviously the stock exchange, which provides basically a trading platform for buyers and sellers to come together and trade in equity securities, debt securities, and obviously this is where the capital is being raised. If the business wants to raise capital, what it does is it submits a listing application to the stock exchange. It submits a prospectus in which it highlights the prospects and the future potential of the company, which basically serves as a marketing document and a guide for the investors who want to contribute towards the shares of such company. So once the prospectus is submitted, the initial public offering process starts, in which the investors can subscribe for the shares of this company. And once they purchase the shares of that company is now listed on the stock exchange. And now that shares can be freely traded among investors. The another part of the ecosystem is a national clearing company. So the trading take place at the stock exchange, and the clearing is handled by the national clearing company, which means that once the buyer and seller agree on a price of a particular security, the function of making payment to the seller and delivering securities from seller to the buyer is performed by the national clearing company in the simplest terms. Another key component of the capital market infrastructure system is the central depository company. This is the company which provides the depository for your shares. So if you have invested in the stock market or if you want to invest in the stock market, your shares will no longer be in the physical form. It will be in the book entry form, which is a much more secure and efficient way of doing business. All your shares are kept in a separate account in your own name. And there are systems and checks and balances in place to ensure that those shares are kept secure and not dealt with or moved without the permission of the investor. Then we have the Pakistan Mercantile Exchange, which is basically the exchange for the trading of commodities market. And there are various commodities which are traded on this exchange, such as gold, crude oil, silver, copper, red chili, wheat. The primary purpose of this exchange is to link the agricultural economy with the investors and provide a vibrant marketplace for trading of commodities. Basically, this is a futures exchange, which it provides a marketplace for the trading of futures of these commodities. So this was basically a very brief overview and sort of very brief look at the benefits at which stock market offers to the general public. But from the sense which I got from the initial discussion, I think we are more interested in sort of getting a deep dive into what prevents our stock market from developing and what are key issues and challenges. So I think the real issue, which has been mentioned earlier also, is the number of investors. Madam Musarat also mentioned this, and I think Nadeem have also mentioned this, that the lack of depth in the stock market is the key reason which is preventing our market from growing. And of course, I have my colleague Sajjad Ali, who is looking after the primary market, so he'll be talking in much more detail about the primary market, the listing side, and what SECP is doing to improve that segment also. अगर हम बात करें इन्वेस्टर्स की, तो आई थिंक सबसे बड़ा इशू जो हमारी मार्केट को इसको दरपेश है वो है लैक इन नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, और इसमें वेरियस फैक्टर्स हैव बीन हाइलाइटेड इन द पास्ट. नदीम साहब ने हाईलाइट किया कि क्या अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कंपल्सन है, क्या प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए और इन्वेस्टर आउटरीच को मोर एफिशिएंट बनाने के लिए एसएससीपी ने बड़ा काम किया है पास में. सबसे बड़ा जो रिफॉर्म हम लेकर आए
वो था डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। इससे पहले हर ब्रोकर के पास कम से कम फिजिकली जाना जरूरी था, जो कि आई थिंक एक टाइम बैंक्स के साथ भी ये सिचुएशन थी कि आपको बैंक की ब्रांच में जाना जरूरी है टू परफॉर्म द बायोमेट्रिक इन दो एंड टू ओपन योर अकाउंट। तो इसमें हमने एक लैंडमार्क ब्रेक थ्रू किया, हमने अपने सिस्टम को मॉडिफाई किया, इम्प्रूव किया, एंड नाउ यू डोंट नीड टू विजिट द ऑफिस ऑफ एनी ब्रोकर टू ओपन योर अकाउंट. You can basically open your account from your home, from your office, by logging on to the website of any broker. इसमें बायोमेट्रिक की रिक्वायरमेंट की जगह सब्सिट्यूट रिक्वायरमेंट भी इंट्रोड्यूस की गई और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस जो है रिफॉर्म का ये चल रहा है. ये ऑटोमेटिकली उस एंगल को भी एड्रेस करता है जो पास में हाईलाइट किया जाता था कि जी बहुत ज़्यादा पेजेस पे साइन करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो फिजिकली इनपुट करनी पड़ती है और डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं. देन वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ सहूलत अकाउंट, जिसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स के सबमिशन का जो एंगल है वो भी इसमें कैटर हो जाता है. इट कैन बी ओपन by just by submitting your NIC. No other document is required, just your key information जो in any case आपको किसी भी इंटरमीडिएरी को देनी होती है जब आप किसी के पास भी अकाउंट खोलने जाते हैं. Your name, your NIC, your residential address, your mobile number, that's it. Very key information और very efficient way of opening an account. उसकी एक लिमिट है, 10 लाख रुपए तक की लिमिट है, and this is in order to promote financial inclusion. Another area जो हमने नोट किया वो ये था कि जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी किसी इंटरमीडिएरी के पास सबमिट हो चुकी है उसको दोबारा जमा कराना, डुप्लीकेशन करना, उसको हल करने के लिए हमने लोकल केवाईसी शेयरिंग का प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें अगर आप एक बैंक के पास अपना अकाउंट खोला हुआ है और जाहिर है कि स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टर आएगा उसके लिए बैंक अकाउंट का होना जरूरी है, तो आपकी इंफॉर्मेशन बैंक से ब्रोकर को पास ऑन की जा सकती है. अगेन जैसे कि मैडम मुसरत ने कहा, बहुत से लोगों को इन रिफॉर्म्स के बारे में पता नहीं है और इसमें ज़्यादा मार्केटिंग अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है. बट दिस बेसिकली इनेबल्स a bank to transfer the KYC information which is already residing with the bank towards a broker, thereby removing the duplication, thereby removing the need of resubmitting the information, resubmitting the documents. और उसकी बेसिस के ऊपर आपका अकाउंट खुल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर. काफ़ी सारे बैंक जो हैं इसमें आ चुके हैं. इसमें स्टेट बैंक को भी क्रेडिट जाता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें बैंक्स स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएरीज के साथ ब्रोकर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, और सीडीसी जो है उसने बेसिकली ये लिंकेज जो है वो प्रोवाइड की है. और ये आइडिया सक्सेसफुली हमने टेस्ट किया था जब रोशन डिजिटल अकाउंट्स ओपन हुए थे हमारी मार्केट्स के अंदर. इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे जब वो बैंक अकाउंट खुलवाते थे उसी टाइम पे उनको ऑप्शन दिया जाता था कि वो किसी ब्रोकर को सिलेक्ट कर लें एंड देन दे कैन बेसिकली ओपन द अकाउंट इन द स्टॉक मार्केट आल्सो. सो दैट हैज बीन translated and sort of made available for the local investors also. Another landmark development which is in the pipeline, which is almost implemented, is the CGP portal, Central Gateway Portal, which has been developed again by the Central Depository Company. Now, this portal enables information sharing between multiple asset classes. So, if you have an account with a broker, that information can be passed on to another broker. So, if you have opened an account with one broker and subsequently we want to open an account with another broker, this system is right now in place in the form of Central KYC organization. तो अगर आपने एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोला हुआ है और आप दूसरे ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है, वो ऑटोमेटिकली दूसरे ब्रोकर के पास जो है वो सबमिट हो जाएगी, आपको दोबारा जमा कराने की जरूरत है. उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सपेंड करते हुए ये पोर्टल हमने इम्प्लीमेंट किया है और जिसमें अभी पायलट इसका हो गया और ऐसा ऐसा इसमें नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बढ़ते जाएंगे, जिसमें आप अगर आपने एक ब्रोकर के पास अकाउंट खोला है उसी अकाउंट इन्फॉर्मेशन को आप यूज करते हुए किसी म्यूचुअल फंड में अकाउंट खोल सकते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में अकाउंट खोल सकते हैं. सो अगेन यू कैन सी जो आई थिंक डिजिटाइजेशन इनोवेशन which is I think very close to the heart of Nadeem Saab and his colleagues and also to SECP. So you can see we are trying to progress in the right direction. I think another key issue which is sort of underscoring the dismal performance of the lukewarm performance of the stock market and the inability to gain more investors despite the huge population and the sort of demographics we have. नादिम साहब ने शुरू में बिल्कुल सही कहा, जो जीडीपी के साथ उन्होंने हमारा कंपैरिजन किया है एज अ परसेंटेज. I think the key issue is the intermediary also. We need intermediaries which are more focused, more interested on getting new investors. उसके लिए हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऑनलाइन ओनली ब्रोकर का. For these you only need a capital requirement of 7.5 million, which is half of the requirement for a normal broker, a trading only broker. ये
अगेन एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जिसमें आप बड़े कम कैपिटल के साथ अकाउंट खोल सकते हैं। ये ऑनलाइन उनके ब्रोकर होंगे, इनको ब्रिक एंड मॉर्टर ऑफिस की जरूरत नहीं है, इनका काम सिर्फ होगा कि इन्वेस्टर्स को थ्रू डिजिटल मींस अट्रैक्ट करें, और इनके लिए सारा इकोसिस्टम ऑलरेडी मौजूद है। दे डोंट हैव टू कीप कस्टडी ऑफ द कस्टमर एसेट्स। We have introduced a professional clearing member which will keep custody of customer assets on their behalf, which will perform the clearing of the trades of the customer on their behalf. They only have to do trading and distribution. Again, ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन है, खासतौर पर जो यंग एंटरप्रेन्योर्स जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। पहले ये बड़ा मुश्किल था, आप यू नीड टू इन्वेस्ट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, यू नीड टू डेवलप एक्सपर्टीज एंड यू नीड टू आल्सो फुलफिल द रेगुलेटरी कंप्लायंस, जिसका बर्डन जो है रेगुलेटरी कंप्लायंस बर्डन वो काफी था और होना भी चाहिए, क्योंकि यार डीलिंग इन पब्लिक मनी, यू आर बेसिकली in the role of providing safe custody for customer assets, whether they be in the form of shares or whether they be in the form of cash which resides with the capital. तो जाहिर है उसके लिए फिर आपको कंप्लायंस और लो रिक्वायरमेंट भी उसी तरीके से फुलफिल करनी चाहिए। वो बर्डन कम करने के लिए प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है, काम कर रहा है, मोर देन 50 ब्रोकर्स ऑलरेडी ऑन बोर्ड कर चुका है, जो आप सिर्फ ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और सारा उनका जो एएमएल का कंप्लायंस है, कस्टडी का कंप्लायंस है, क्लियरिंग का फंक्शन है, वो सारा वो ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। So the compliance requirements have been reduced by more than half of these brokers. So the ecosystem is being continuously developed, being continuously reformed, being continuously improved, and the aim is there to increase the number of investors, to increase the outreach, and once we achieve that target, once we increase the number, this साल थोड़ी improvement हुई है, तो for the first time we have crossed the target of 300,000 investors, which is still very low. So there is still a lot to be done, and we look forward to the suggestions, more practical insights into how we can do better. But I think I have taken a lot of time, but this issue is very close to my heart also, because I also want to see this market flourish and grow, and I think the key answer lies in increasing the number of investors as far as the promotion of capital market, secondary capital market is concerned. I think Sajjad is now waiting eagerly for his turn. So I will, without taking further time, Sajjad is now over to you. देखिए, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जी यू आर मेकिंग डेवलपमेंट्स, बट द इशू इज कि अगर हमारे पास स्क्रिप्ट ही नहीं है, छोटी पर्चों की कंपनी है, एसएमईज है, यू आर नॉट इवन सेलिंग एनी रियल कंपनीज, not a single company there, if you take out the government multinationals, $1 billion company कोई नहीं आपको। So there's lots of noise from your side. We cannot hear you. I think there's cross discussions going on. Hello, can you hear me now? I can hear you. I think there is some cross discussion going on. I can hear others speaking in between. No, I don't think so. Anyway, आप देखें, is it better? जी, now it's okay. Okay. ओके जी, बात ये है कि ये तो बात होगी कि आपने काफी रिफॉर्म्स किए, बट द क्वेश्चन इज दैट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट इनफ मनी, यू आर लुकिंग फॉर बीज टू कम इन, देयर इज नॉट इनफ मनी। हमारे पास स्क्रिप्ट है नहीं, फैमिली ओन्ड कंपनीज, प्रोफेशनली रन कंपनीज कोई नहीं है, डाइवर्सिफाइड कंपनीज कोई नहीं है, एंड फ्लोट बहुत थोड़ा है, एंड एट द सेम टाइम क्या कहते हैं, पीपल डोंट ट्रस्ट द मार्केट एट ऑल। इस पे क्या कर रहे हो? जो चीनी इन्वेस्टर आए थे वो आके भाग क्यों गए? ये भी तो हमें थोड़ा सा बता दें ना। तो शायद do you have anything to say? नहीं, just one or two things कि इन पहले वाली बात भी हो गई। Just to, in fact, questions. How do we get more companies, corporates listed, जो actually attractive होंगे? हम तो मतलब मुझे वाकई में खुद समझना चाह रहा हूँ कि how do we get them interested कि आके अपने आप को लिस्ट करो, and so that's the first question. The second question is कि यार ये जो companies हैं जहाँ float कोई नहीं है, is there a way कि उनका जो stake है sponsors का वो बढ़ाने का तरीका कोई हुआ जाए, may not necessarily apply only to SECP, ताकि उनका जो stake equity में अगर बढ़ेगा and they are less reliant essentially on funding available from banks so readily, तो फिर शायद they would be forced to go to the market and obviously give the kind of returns that would attract people. So मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग के ये इस पर क्या ख्याल है? तो सयाद साहब अपनी बात कर लें, उसके बाद जरा अगर ये दो सवालों के भी जरा बात हो जाए, क्योंकि ये इस वक्त तो वो लेवरेज बढ़ा लेते हैं, आपको हमसे बेहतर पता है इन चीजों का। We're trying to understand, is there a way that we can get them, their
leverage reduced and force them to actually raise equity. Or that of open stake, या तो अपना stake बढ़ाएंगे, taken to maintain their hold over the company, या in fact go out into the market and try and raise money. और वो अगर बड़ा ही नहीं होना चाहते हैं, it's fascinating, Siddharth sir. मैं वो सियालकोट को देख रहा था, and I find it fascinating. Here is a company, there are these small companies which are purely an export. So उनका exposure दुनिया का बाकियों से शायद मुख्तलिफ है. They're pure exporters. एक नहीं है जिसने अपने आप को corporate बनाया है. So one starts wondering क्या हो रहा है. And it would be interesting to hear your perspective. कि यार, even those who have that kind of exposure, वो भी family-owned businesses से बाहर नहीं निकले. आप लोगों का क्या ख्याल? I mean, just trying to understand. Frankly, I'm as confused as Nadeem is on this. Yes, Sir, thank you very much for giving me this opportunity, and Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and my Assalamu alaikum to everyone. Sir, right now I'm dealing with two very distinct types of audience because in my mind, what I was presenting was to create greater awareness and reach out to people and try and make them understand the investment avenues in the capital market. And on the other hand, I have people as learned as you and Nadeem Saab as well. So I'm going to try and sort of make a mix which can hopefully make all of us a bit wiser. And, I'll try and address the questions as well. I think one of the core issues that we're facing is a lack of understanding regarding the market and the products that are available in the market and the type of people that can approach the market. So here's just a teaser for you all, leading from what you were saying regarding, a lot of people don't have accounts in the capital market. They're not directly investing in the capital market, but whether we like it or not, all of us are intricately linked to the capital market, and it is already a very significant part of all our lives. Wherever we are keeping our money, it is eventually being funneled to the capital market through the banks, through the insurance companies, through the pension funds, through government and non-governmental organizations, the taxes that the government is receiving. So, capital market से हमारा ताल्लुक तो आज भी बड़ा गहरा है, चाहे हमारा capital market में directly कोई account हो या ना हो, या हमने अपनी कोई कंपनी उस पे लिस्ट की भी हो या ना की भी हो. So building on that, like Asif Saab said, just from a very basic understanding, and I'll try and go to a little advanced level as well. Capital market activities में हमारे पास primary market activity है, जहाँ पे securities are sold for the first time. This is a core area that Nadeem Saab has also highlighted and Shahid Saab has also highlighted. So I'll get back to the issues associated at a later stage. So this is the market for new issues. इसमें आप debt या equity के पहली दफा जब आप investors को stake offer कर रहे होते हैं. So just to simplify, if it is a company, then the sponsors of the company would be divesting some of their shareholding to the general public for the first time. So that would be considered as a primary market activity. Once that the shares of that company are offered to the general public, तो general public के लिए एक prerequisite है कि जब आप जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व कर रहे हो तो उनके पास एंट्री और एग्जिट का फ्रीडम होना चाहिए. दैट लिक्विडिटी इज प्रोवाइडेड बाय स्टॉक एक्सचेंज, और अगर वो लिक्विडिटी नहीं होगी तो अल्टीमेटली बहुत मुश्किल होता है कंपनीज के लिए शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना, फंड्स को अट्रैक्ट करना फ्रॉम द जनरल पब्लिक. And again, why would I invest in something if I know I'm going to be stuck in it for X number of years? So the secondary market is offering you that liquidity कि जो कंपनी लिस्ट हो गई है, पब्लिक ऑफर उसकी हो गई है, उसके शेयर्स में जो ट्रेडिंग है वो, या उसकी सिक्योरिटीज कोई डेट सिक्योरिटीज हैं तो उनमें जो ट्रेडिंग है. Then we have a third component which is not as much talked about in Pakistan, unfortunately, and the market has also not developed as much as we'd like to see, and is in other jurisdictions. That is the derivatives market. हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव्स में जिस तरह आसिफ साहब ने मेंशन किया कमोडिटी एक्सचेंज भी है, बट आई विल स्टिक टू द स्टॉक एक्सचेंज डेरिवेटिव्स, जहाँ पे हमारे पास फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. इनमें हमारे पास सिंगल स्टॉक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि अगर आज आपने एक कंपनी जो ट्रेड कर रही है एंड इट इज मीटिंग सर्टेन क्राइटेरिया, तो उसके लिए आप एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हैं, एंड यू कैन बेसिकली प्रिडिक्ट
the price of the company after an X amount of time, and you can take a position based on that prediction of yours. इसमें हमारे पास जो इस टाइम पे फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिलीवरेबल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो which adds another mix in terms of the flexibility that investors in our jurisdiction have, क्योंकि बहुत सारी jurisdictions हैं वहाँ पे ये है कि अगर आज मैंने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिया है और वो 30 दिन बाद मैच्योर होना है, तो उसमें आपको at the end of the day the price that I bought it at and the price that it is going to mature at, उनको net करके आपको एक कैश में सेटलमेंट दे दी जाती है. So either it will be a gain or a loss. Right now in Pakistan, what we have is that if I bid for a security and I buy that security, at the end of the contract, I will be able to get the security in my account. So it is a deliverable futures contract. Just very quickly, a little basic for Shahid Saab and Nadeem Saab, but I'll try and make this brief. What is an IPO? An initial public offering, which is a first-time sale of securities to the public by an unlisted company. One of the modes of raising funds by corporate businesses to meet their financing needs. इसमें financing needs में expansion भी हो सकती है, working capital भी हो सकता है, greenfield projects भी हमने allow किए हुए हैं. अभी हमने GEM board भी introduce कराया है. I'll get into that in the next couple of slides for small cap companies. So the common types of securities that are offered through the IPO, primarily हमें जो पता है वो equity securities, जिसमें आपके ordinary shares आ जाते हैं. फिर हमारे पास डेट सिक्योरिटीज हैं. डेट सिक्योरिटीज में कॉर्पोरेट डेट में बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं जो जनरल पब्लिक के पास तो कम, मगर प्राइवेटली प्लेस्ड बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, जिनमें टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स हैं, कमर्शियल पेपर्स हैं, कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज हैं. And then we have Sharia compliant securities which actually overlap with the equity and debt securities. So any equity or debt security could be marketed as a Sharia compliant security if it is meeting the principles of the governing Sharia laws. सर प्राइमरी मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो हमारे पास पब्लिक ऑफरिंग रिजीम में लाइक आई सेड डेट और इक्विटी है. देन देयर इज आल्सो अनदर सेगमेंट व्हिच इज नॉट टॉक्ड अबाउट वेरी मच इन पाकिस्तान. हमारे पास एक फर्दर इशू ऑफ कैपिटल की भी जो है इशुएंसेस आते हैं, और फर्दर इशू ऑफ कैपिटल बाय लिस्टेड कंपनीज में हमारे पास कंपनीज मेक राइट इशूज. They can make other than right issues where they can make a preferential allocation to shareholders or potential shareholders, and then we have employee stock option schemes. तो ये भी हमारी प्राइमरी मार्केट एक्टिविटी होती है, क्योंकि इसमें भी कैपिटल फॉर्मेशन वन वे और अनदर हो रही होती है. और अगर आप देखें तो राइट इश्यूज के थ्रू भी काफी कंपनीज जो है वो फंड्स रेज कर रही हैं पास्ट में. उसमें ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमने इनको एक पूरा ट्रांसपेरेंट फ्रेमवर्क दिया हुआ है. उसके अंदर दे जस्ट हैव टू मेक अ डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एंड दे कैन रेज फंड्स फॉर अ होस्ट ऑफ पर्पसेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. सो द पर्पस इज के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर पैसा पुटअप करना चाह रहे हैं, मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं कंपनी में, तो दे कैन पुट अप द मनी. And इसके अंदर जो है वो again the existing shareholders have the right that if they do not want to invest further, they can trade that letter of right on the stock exchange and keep their shareholding the same and give the chance to invest in the company to someone else. फिर सर हमारे पास units हैं funds के, जिसमें कुछ तो collective investment schemes हैं. उसमें I'm hoping कि a lot of you will be more familiar with mutual funds. Mutual funds की ही एक variation, I think Asif Saab also mentioned, is exchange traded funds, which are practically units of a fund that is investing in a basket of securities. तो जब वो basket of securities में invest कर रहा है, तो अगर आप उस fund का एक unit purchase कर लेते हैं stock market से, तो you are practically taking exposure for the entire basket that that fund is representing. अच्छा, ETFs में जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ETFs trade just like any other share on the stock exchange and they can be bought and sold rather than हमारे जो म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें क्रिएशन और रिडेम्पशन की ऑप्शन होती है. Then we have real estate investment trusts. Real estate investment trust को भी हम लोग यहाँ से मैनेज कर रहे हैं. It is a fund which is taking exposure on real estate projects or real estate properties. और उस फंड के अंदर स्मॉल इन्वेस्टर्स हैव द एडवांटेज दैट इफ दे गो टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड इन्वेस्ट इन दैट, दे कैन अनलॉक द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट, जो कि नॉर्मली क्योंकि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का टिकट साइज बहुत हाई होता है, तो नॉर्मल स्मॉल इन्वेस्टर्स को वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती. सो वेरी क्विकली मेजर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमारे पास, जिस तरह मैंने कहा, एक हमारे पास PSX पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे देयर इज अ मेन बोर्ड, जहां पे नॉर्मल कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ ओवर 200 million rupees, they come and list.
अपर कैप इसमें कोई नहीं है, स्काई इज द लिमिट। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसका चैप्टर 5 ऑफ PSX रेगुलेशंस में है। हमारे पास यहाँ पे पब्लिक ऑफरिंग रेगुलेशंस हैं जिनके तहत उसने प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है। देन वी हैव द जेम बोर्ड विच इज अ स्मॉल कैप कंपनी बोर्ड। यहाँ पे हमारी मिनिमम 25 मिलियन रुपीस का कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड द रिक्वायरमेंट्स आर कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड। जेम बोर्ड के ऊपर बिकॉज देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस इन द लॉ that when you are going to issue to the public, there has to be a higher standard of disclosure. So for that, अगर आपने मेन बोर्ड पे आना है, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, जेम बोर्ड में आप खाली अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं, जो कि हमने रेगुलेशंस में डिफाइन किया हुआ है एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स एंड इंडिविजुअल्स हैविंग 5 मिलियन और मोर ऑफ नेटवर्थ। उनको अगर आपने पिच करना है और आपकी स्मॉल कैप कंपनी है तो आप ग्रोथ एंड इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर आ सकते हैं। एंड उसके साथ हमारे पास एक फ्यूचर्स का डेडिकेटेड सेगमेंट है जिसके अंदर हमारे डिलीवरेबल और इंडेक्स फ्यूचर, सिंगल स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स वगैरह ट्रेड हो सकते हैं। और फिर PSX के पास एक बॉन्ड्स ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का एक पूरा प्लेटफॉर्म अलग से बना हुआ है जिसके अंदर डेट सिक्योरिटीज ट्रेड हो सकती हैं। आई सी आई एम ऑलरेडी गेटिंग अ बिट ऑफ क्वेश्चंस, आई जस्ट एंटरटेन ऑल ऑफ देम एट द एंड। अच्छा, प्रोडक्ट्स में अगर आप आए सर तो वेरी ब्रॉडली जस्ट टू रिकैप, वी हैव शेयर्स ऑफ कंपनीज, वी हैव कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स, then we have rights and letter of rights, then we have units of REIT schemes, futures contracts, like I said, government debt is again listed on the stock exchange. ये जितने भी गवर्नमेंट के आपके बॉन्ड्स हैं इनको आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके परचेज कर सकते हो, although you know, as you may know, इसके ऊपर एक्टिविटी बहुत कम है। then we have some mutual fund products, like I said, ETFs हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसी इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स स्टॉक एक्सचेंज पे बाय सेल के लिए तो नहीं है, बट वी हैव सम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जिनके अंदर भी आपको जो उसकी नैव मिल रही है या उसकी जो अप्रिसिएशन मिल रही है यूनिट्स, वो आप यूनिट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। सो दोज प्रोडक्ट्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन पैरेलल विद द कैपिटल मार्केट। जस्ट टू वेरी ब्रीफली कवर द ट्रांजैक्शन फ्लो, तो आज अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मी एंड यू कैन नॉट गो डायरेक्टली टू द स्टॉक मार्केट एंड बाय एंड सेल। हमें एक इंटरमीडिएट ढूंढना होगा विच इज अ ब्रोकर, एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि शायद साहब को काफी ज्यादा टाइम लग गया ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलने में, बट अभी फिलहाल ये प्रोसेसेस हमने बहुत ज्यादा ऑटोमेट भी कर दी हैं। कोशिश हमारी यही है कि इन प्रोसेसेस को जितना सिंप्लीफाई कर सकें हम कर दें। इसमें जो 3 प्री रेक्विजिट्स हैं बिफोर यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इज के आपका पहले एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा फ्रॉम द ब्रोकर हु विल सेंड अ रिक्वेस्ट टू द नेशनल क्लियरिंग कंपनी। The national clearing company will come back with the unique identification number based on which the broker will give you a client code. और because हमारा एक undisclosed market है जहाँ पे ये पता नहीं चलना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे if I am taking a position तो मार्केट को ये नहीं पता होना चाहिए कि पीछे सज्जाद अली है या नदीम साहब हैं। So it is an undisclosed market, तो उसके अंदर एक client code के थ्रू orders execute हो रहे होते हैं to maintain confidentiality as well. तो ब्रोकर आपको एक अकाउंट अपने पास खोल के देगा, उसके साथ एक क्लाइंट कोड असाइन करेगा और पैरेलल में ही आपका एक CDC अकाउंट खुलेगा जिसके अंदर अल्टीमेटली जो भी सिक्योरिटीज आप परचेज करेंगे वो CDC अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन इन डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में वो लैंड करेंगी। और उसके साथ जो है अगर आप कल को कोई सिक्योरिटीज सेल करते हैं तो वो सिक्योरिटीज जो है वो आपके इस अकाउंट से निकल के किसी और के अकाउंट में डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में लैंड कर जाएंगी। So that is very quickly an overview of what I had in mind, just to educate and create a bit of awareness. As regards the specific questions, sir, bilkul, there are no two ways about what you are saying. I mean, you know, yes, 300,000 plus investors in 260 million population. You know, listed companies, we have over 200,000 listed companies which are currently registered and incorporated at the SECP. हमारी लिस्टेड कंपनीज 500-525 हैं, उनमें से अगर आप ब्लू चिप पे आ जाएं तो वो और श्रिंक हो जाती है यूनिवर्स। इसमें सर काफी सारे इनहेरेंट इश्यूज हैं फ्रॉम द SECP perspective. You know what I've tried, and again this is my personal opinion, what I've tried to do since we've taken over the primary market approvals department, तो प्राइमरी मार्केट में हमारे चेयरमैन साहब की डायरेक्शन में और कमिश्नर साहब की डायरेक्शन में वी आर ट्राइंग टू मेक the process as simple as possible, automate as many of the data fields as possible, and we are also trying to build a bridge between थोड़ा इन्वेस्टर थोड़ा दूसरी साइड पे थी आज ना। देखिए आप तो बात कर रहे हैं इन्वेस्टर, बिल्कुल मान लें, पर देखिए इन्वेस्टर आर नॉट सकर्स।
Please give me a reason why I should go into the Pakistani stock market. जी सर, मैं अभी इश्यूअर्स की साइड से आता हूँ. हाँ, ये बताइए कि आपके पास फैमिली रन बिजनेस, आपने जो बताया 500 कंपनी, इनमें से कितनी ट्रेड करती हैं और कितनी जस्ट डेड कंपनी है जिनको होना नहीं चाहिए, और कितनी कंपनीज हैं जिनका कोई फायदा भी हो रहा है. और अगर हिस्टोरिकली देखें तो स्टॉक मार्केट हाउ इज इट परफॉर्म, तो थोड़ा ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट भी तो करे ना. आप तो प्रोसेस बता रहे हैं. आप मुझे बताइए, मैं सोना छोड़ के या डॉलर छोड़ के आपके पास क्यों आऊँ? सर इसमें एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू द क्वेश्चन. असल में आपके क्वेश्चन का जवाब ना टू प्रॉन्ग्ड है. आपके क्वेश्चन में पहला सवाल जो है वो आपने रेज किया कि इशूअर्स क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ आपने रेज किया कि इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ रहे. तो आई वाज फर्स्ट टैकलिंग, इफ यू वांट मी टू गो टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली देन आई विल गो टू द इन्वेस्टर्स. इफ यू वांट मी टू स्टार्ट विद द इशूअर्स तो आप बताएं सर, जैसे आप कहते हैं. क्योंकि बात बड़ी सिंपल है, मक्खी वहां थी ना शहद हो, जब शहद ही नहीं तो हम क्यों आए? अच्छा, तो सजाद, आप इसको क्लैरिफाई कर दीजिएगा, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी कि हम ये कहें कि जी क्यों नहीं आ रहे हैं. तो जो मैंने शुरू में भी बात की कि अगर आपको गोल्ड में ना आपको कोई KYC करनी है, ना आपकी AML है, ना कोई टैक्स का मसला है, तो जब वो सारी चीजें नहीं, और मैं जब यहाँ आऊंगी एज अ इन्वेस्टर या एज इवन एज कॉर्पोरेट, मुझे जहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, जहाँ पर मुझे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे, जहाँ पर मेरी KYC होगी, AML लगेगी और FBR के मुझे 50 चीजें और करनी पड़ेंगी, तो मैं तो नहीं आऊंगी. दीज आर डिस्करेजिंग एंड दीज आर बियॉन्ड SECP's कंट्रोल. SECP एक इनेबलिंग, और जो दुनिया भर में जो रेगुलेटर्स होते हैं वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको सारा कॉर्पोरेट डिजिटलाइज करके देते हैं. आपको पकड़ के ला नहीं सकते हैं. दैट इज नॉट फॉर द रेगुलेटर्स. क्योंकि कल को अगर आप किसी इन्वेस्टर्स को भी सिर्फ ये आप अवेयरनेस इन्वेस्टर साइड पे जरूर क्रिएट कर सकते हैं, बट इन्वेस्टर को लोअर करके ले आएंगे और कल को उनको नुकसान होगा. बिकॉज स्टॉक मार्केट एंड शेयर्स आर रिस्की बिजनेसेस, दे आर नॉट रिस्क फ्री लाइक आपका गोल्ड होता है, या जहां पर मैंने अगर किसी प्लॉट में इन्वेस्टमेंट की तो मुझे पता होगा कि ये इन्वेस्टमेंट में मुझे 4 महीने में मेरा डीलर कहेगा कि ये आप फाइल बेच दें, आपको फायदा होगा. तो जो स्ट्रक्चर्ड और जो कॉर्पोरेट फॉर्म में चीजें होती हैं उसमें रिस्क भी होते हैं, और उसमें एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ FATF, KYC, टैक्सेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी होती है. क्योंकि उसका दूसरा एस्पेक्ट होता है इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन ऑल्सो. हम वो सारा एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकते जहां पर हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की प्रोटेक्शन को ना देख सकें. एज अ रेगुलेटर वी हैव अ वेरी फाइन लाइन to make sure that there is development, but at the same time there is protection of interests of the other stakeholders also. आप सजाद साहब अगर आप कहना चाहें तो बताएं. Sorry, can I just step in for a second? जी सर. नहीं, देखिए इसमें कोई बहस नहीं है कि part of the thing is a process which has to be facilitated for potential investors. इसमें कोई बहस नहीं होगी. So to an extent you are preaching to the converted, huh? तो हमें इस चीजों की समझ है. मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, ये जो आपने कहा ना कि जी वहाँ पे KYC नहीं होता, ये KYC, I'll give you another example. I know enough people जो अब म्यूचुअल फंड में भी जा रहे हैं, वो कह रहे हैं यार म्यूचुअल फंड उसी में जाऊंगा जो मनी मार्केट में है. ठीक है, because this lack of trust now, the one who's going to the mutual fund वो डॉक्यूमेंट कर रहा है ना, ठीक है, उसके पास वाइट पैसा है. बट टुडे ही वुड स्टिल प्रेफर कि यार बेहतर यही है, नॉट बिकॉज देयर इज एनी फैक्ट के जीवन तो 2 महीने बाद उसको उसमें कोई रिटर्न मिल रहा है नहीं मिल रहा. देयर इज दिस लैक ऑफ ट्रस्ट एंड द लैक ऑफ the fact of the return will is not just risky. रिस्क सबको समझ आती है कि मैं जब इसमें जाता हूँ कि रिस्क वाला एलिमेंट क्या है. मैं ही कह रहा हूँ कि people will not come no matter what, how good the processes are, if the returns are not attractive. मैं म्यूचुअल फंड में जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बात यह है कि I would rather stay in a mutual fund which is in the money market. ठीक है, और मनी मार्केट आपको पता है essentially is government securities. The second area, I'm just on that. ये बात ये है कि what do we do to make it more attractive, not from the regulatory point of view, but इसलिए मैंने सवाल पूछा था. How do we make the sponsors, have either a bigger stake or seek investor? ये आप लोगों की view क्या है? I mean, I understand you are. जी.
completely agree with you, and as you rightly also mentioned, I think ये forum सारा थोड़ा सा गलत है. We here at one side we have completely bachelors के and perhaps students who not even qualified, and the other side we have professionals like you sitting. This could have been a separate session. लेकिन आपने बिल्कुल you hit the nail on the head, which is कि आप क्यों नहीं आते हैं. तो आपके जो macro economics हैं, आप उस पे अगर जाएंगे तो you will find all those answers which are beyond SECP, especially जिस तरह आपने मनी मार्केट की बात की. मनी मार्केट में मैं क्यों जाती हूँ? इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है. मैं खुद भी अगर जाऊंगी तो मैं मनी मार्केट इसलिए प्रेफर करूंगी. मैं स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी इस इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से स्टॉक मार्केट में एक्टिविटी भी कम है. आपने टोटली अगर आप देखें ट्रेड आपने यू डिसबैलेंस इतना किया हुआ है कि एक्सपोर्ट्स आपके डिस्करेज हैं, एलसीज आपकी नहीं खुल रही हैं. तो जो कंपनीज जो बेचारी ट्रेड ओरिएंटेड एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगे, उनके शेयर्स में क्या आप तब्दीली देखना चाहेंगे? आप देखेंगे कि उनमें राइज आएगा? नहीं होएगा. So it's a much beyond phenomena than what SECP in terms of regulation is doing. Musarat Bibi, I can tell you with a great deal of authority and knowledge, I know enough people your family ke log hain, who in the stock market, are listed and they're heavily protected. और वो openly मुझे कहते हैं कि यार we have never made the kind of money that we have made under this environment. मैंने पूछा यार तुम डिविडेंड तो किसी को नहीं दे रहे. So you start wondering. Here are people, believe me, and I've seen them make the kind, I'm talking about listed, make the kind of money they claim they have. I mean, they're themselves saying they have never made in the last 2 to 3 years. Anyway, मैं खत्म कर रहा हूँ. There are enough people who raise their hand. They should be asked. एक second, let's get Salim Khan sir. Salim Khan sir, बोलिए. Salim Khan sir, will you speak? Salim Khan नहीं बोल रहा. Manan sir. Manan sir. Assalamualaikum, sir. Go ahead, Salim Khan. I'm Salim Khan, sir. Sir, I have traded since last 4 years, and I have traded Mercantile Exchange Pakistan. Once there is a lot of traffic, and you have an opportunity to trade on Mercantile Exchange, they block your order and they never ऑर्डर टू द पॉइंट. मतलब आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तब आपको पता चलता है कि मैंने यहाँ पे तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करना था. वो आगे से आपकी ऑर्डर उस लेवल पे प्लेस कर देते हैं जहाँ पे आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है. तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन प्लेटफॉर्म को ट्रैक भी करते हैं कि क्या वो रियल टाइम में ट्रेडिंग करते भी है कि नहीं करते. क्योंकि इन्वेस्टर को अगर ये पता चल जाता है कि मेरी राइट टाइम पे ट्रेडिंग नहीं हो रही, तो वो फिर क्यों इस तरह के प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करेगा. और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तमाम तर रेगुलेशन यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरह फॉलो करते हैं, लेकिन उसी की तरह आप उसको फिर जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है या जो इन्वेस्टर साइड है उसको आप उस तरह नहीं देखते. मतलब हमारे रूल रेगुलेशन जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के है वो तो सारे के सारे यूएस की जैसे है वो उसी तरह है, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी जो आपकी ट्रेडिंग फ्यूचर्स पे होनी चाहिए वो ट्रेडिंग फ्यूचर्स पे वो ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती. मतलब मैं कैसे फिर क्लेम करूंगा कि मेरी जो ट्रेड थी वो सही उस पॉइंट पे नहीं लगी और मैं उसको किस तरह रिकंसाइल करूंगा. यार एक वो अब्दुल मनान साहब बताएं जमीन का नाम से. अब्दुल मनान साहब. उन्होंने लिखा है कि इससे छोटी जल्दी गुजरात. अब्दुल मनान साहब, are you there? ये तो मैं भी देख I think Manan साहब ने वो एडिशन जी देखिए जैसे मतलब PIDE is a special institution. PhD students, MPhil students, master students. So they study finance too. They know most. Asif and Sajjad, are you able to hear what's being said? नहीं जी, not well. Because there's lots of talking in between. Ji, we can't hear at all. Exactly. Can you hear me now? जी सर. मैं कह रहा हूँ कि कोई क्या कहते हैं, एक तो पाइड में MPhil और PhD स्टूडेंट्स होते हैं, तो प्लीज इनको थोड़ा सा वो लेवल बेशक they know some of the stuff. The main question that we have is we are trying to do research on this. We want to find out the market को grow कैसे. जी मैं कह रहा था कि बड़ी सिंपल बात है, ये सवालों का जवाब देते हैं. And then I think quite frankly discussion that we need to have, because PIDE is a postgraduate institution with a lot of people who are researching in this area. So we'd like to find out how we can help you improve it.
We are not जी, sure. critical. We want to improve the market, and quite frankly, the market में हमें buzz नहीं नजर आती. Buzz कैसे? For example, एक चीज. Why is there no takeover market in Pakistan? ये बताइए. Why aren't takeovers happening? So I can respond to that. मैंने अभी recently एक analysis किया था. So there were about 59 takeover transactions in the past about 7 to 10 years. जब से मैंने ये analysis किया था, तो अब वही वाली बात है कि listed company की takeover transactions तो हो रही हैं practically. और बल्कि ये PSX से ही हमने ये information निकलवाई थी और अपना भी हमने analysis किया था. अगेन ये हमारी टेक ओवर रिजीम, फिर थोड़ा सा हम डाइग्रेस कर जाएंगे टॉपिक से, बट जस्ट कमिंग टू मैम, आपकी इजाजत से कि कुछ कमेंट्स जो पहले हुए थे इसमें सर वेरी ब्रीफली अगर मैं आप लोगों को कुछ जवाब दे सकूं शायद सेटिस्फाई हो जाएं उसमें. अगेन गोइंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैडम मुसरत, यस दैट वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू लिस्ट, वी कैन नॉट फोर्स एनीवन टू कम ऑन द मार्केट. मगर सर अगेन वही वाली बात है कि इस इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में यू नो इफ यू आर अ कंपनी and you're still raising money from a bank, then yes, it raises issues in terms of why you are comfortable in doing that, which is costlier. मगर cost of equity आपको पता है कि comparatively फिर भी higher रहेगी. दूसरा ये कि सर I think there is a need to develop a listing ecosystem. There is a need to develop you know entrepreneurship cultures in our country, and there is also a need कि जो हमारे बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको लिस्टिंग के बेनिफिट्स प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहे. इक्विटी एज एन एसेट क्लास, सर आप लोग तो सारे रिसर्च के एक्सपर्ट्स हैं, अगर आप स्टडी करें तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास ओवर द लॉन्ग टर्म इट परफॉर्म्स बेटर फ्रॉम गोल्ड एंड रियल एस्टेट. बट वही वाली बात है कि हमारे पास जो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर है, अगर वो क्विक बक्स के लिए आ रहा है तो यू नो डे ट्रेडर बन के आ रहा है, as an asset class in terms of dividend, in terms of हमारी ये dividend adjusted indices हमारी apply हुई हैं. We would really appreciate अगर आपके ये जो students हैं, जो graduates हैं, वो इनके ऊपर भी काम करें कि you know अगर long run में देखें तो equity is outperforming. रह गया सवाल ट्रस्ट का, तो आई थिंक ट्रस्ट से ज्यादा इट इज कन्वीनियंस एंड कल्चर एज वेल, इन टर्म्स ऑफ कि अगर मैंने आज मिजान बैंक में फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखवाया हुआ है या मनी मार्केट फंड में अपना पैसा रखवाया हुआ है, तो मुझे डायरेक्टली उसके बारे में ज्यादा कुछ फिक्र करने की या उसके बारे में सोचने की जहमत नहीं अपने जहन को देनी. मैंने जो पैसा रखवाया हुआ है वो ऑटोमेटिकली एक फंड मैनेजर ऑपरेट कर रहा है मिजान बैंक में या कहीं और मैंने किसी बैंक में रखवाया हुआ है, तो वहां पे बैंक मुझे जो भी रिटर्न दे रहा है चाहे वो मार्केट से कम दे रहा हो, आज अगर इंटरेस्ट रेट 24% चल रहा है और बैंक मुझे मेरे अकाउंट पे 14% भी दे रहा होता है तो मैं उससे भी खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वहां पे आई डोंट हैव टू यू नो एक्सरसाइज द मसल इन माय ब्रेन. बट कुछ यस लाइक मैडम मुसरत सेड कि ये तो डीप डेल्व वाले जो इश्यूज हैं इन पे वी कैन डेफिनेटली हैव, आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर एक फिजिकल सेशन हो, ज्यादा बेहतर हो कि फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो उसमें. बट ओवरऑल जो है इन अ बैंक सेंट्रिक सोसाइटी, इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, आजकल के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में द पीपल दैट आई एम टॉकिंग टू दे डोंट वांट टू मूव एन इंच. You know, they want to see how the policies are developed and framed and then move. गवर्नमेंट डेट के ऊपर हमने लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, बट अगेन यू नो नो मेजर डिसीजंस आर बीइंग टेकन. तो बहुत सारी चीजें हैं सर, इसमें कोई एक पिन पॉइंट तो नहीं है. एंड गिवन योर स्टैचर और आपका और शाहिद साहब का, तो जाहिर है आप लोग उस पर बहुत बेहतर एनालिसिस भी करके हमें दे सकते हैं. एंड इफ देयर इज एनीथिंग, एनी सजेशंस दैट यू नो वी शुड बी टेकिंग इनटू अकाउंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ रेगुलेटर, तो वो सजेशंस आप जैसे लोग और आपकी इंस्टीट्यूशन से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो स्कॉलर्स का रोल है हमारे मार्केट्स के लिए, हमारे उनके लिए वो बहुत जरूरी है और वो ध्यान जरा कम लोग दे रहे हैं. तो सर ओवर टू यू. थैंक यू. सज्जाद साहब, हमने कुछ चीजें तो लिखी हैं. फॉर एग्जांपल हमने पॉइंट आउट किया आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत फ्लॉज है. आपके जो डायरेक्टर्स हैं, डिस्पाइट के पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बन गया है, वो अगेन बात नहीं करता किसी से भी, वो चुप के बैठा हुआ है. What is the Pakistan Institute of Corporate Governance doing? Is it ensuring that there's a small club that can only become participating board of directors? आपके board of directors NIT से आते हैं या bankers होते हैं और कोई खास बंदे नहीं. There is no outside civil society members who get the board of directors. नंबर 2, मुझे बताइए NIT क्या कर रही है? Why can't we get rid of NIT? NIT is a new era body.
Can we get rid of that? I think there are lots of things that we can talk about. For example, takeover market should be much more vibrant. There are lots of companies that are old and stodgy that should be taken over. And for example, mark to market जो है, क्यों ये पुराने जो industrial estates के लोग बैठे हुए हैं, इनकी mark to market नहीं होती. बहुत सारी कंपनी है जिनके पास बड़ी वैल्यूबल जमीन है, वो mark to market नहीं होती. उनके जो ओनर्स हैं वो फिर वहाँ शॉपिंग मॉल बना लेते हैं, अपने चालाकी से पता किसी को नहीं चलता. फिर ये है कि आपकी काफी सारी practices हैं that we have to think about. इन चीजों पे can we have a discussion? Maybe if you think this is not the right forum, we should have a discussion. We are trying to help you. We're not trying to ambush you. We are trying to help you because, quite frankly, we think that there should be a stock market in this country. And it is very distressing to see that the stock market is actually shrinking. Would you not agree with me? And long-term returns, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई इतने अच्छे हैं. पर आज सब आपने long-term returns पे काम किया ना, stock market returns कैसे हैं? सर ये तो बल्कि किसी जमाने में ना PSX अपनी एनुअल रिपोर्ट में भी इक्विटी एज एन एसेट क्लास की परफॉर्मेंस देता था, वो मैं भी दोबारा देख लूंगा. एंड अगेन सर वी आर एब्सोल्युटली 100% अप्रिशिएटेड कि आप जैसे माइंड्स जो है वो हमें सजेशंस भी दें और देखें. वी डोंट फील एम्बुश्ड एट ऑल एंड वीड बी हैप्पी टू इंटरैक्ट विद यू एज मेनी टाइम्स. How do we begin to look at these issues? When do we talk about these issues? ये issues बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी मार्केट में I don't know. I mean, do you feel comfortable the market is going well? माना ये macro issues है, जरूर है. तो क्या macro issues में is Pakistan just going to, you know, lose itself या क्या होगा? देखिए ना macro देखो ना दो चीजें हैं. And I know you want to close the webinar very quickly. Just thoughts. आपने आज की बात की, but the stock market hasn't performed as well even in the past. So long term, अब वो rates of return वो फराज ने कुछ काम किया हुआ, but we talk about it separately. ये जो आज की बात हो रही है ना, और ठीक कह रहे हैं आपके in an environment of uncertainty, people will always have a short term view. ठीक है, आप उसको speculation कह लें, कुछ कह लें, people will have a short term view. जहाँ गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि सुबह उसने क्या करना है, you can't expect me to take a long term view. ठीक है, so वो आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, which has nothing to do with really rates of return in a sense. It is when the horizon जिसका signal देना है is the government which has really literally a one day view. You can't expect others to take a long term view. So वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है. Let's just end now and वो जो नदीम साहब ने ऑफर किया, let's get together. If we're all trying to achieve the same objective, कोई SEC पे अटैक नहीं बता रहा, और आपने ठीक बात की कि we should have a continuous dialogue. We'll all learn from each other. ठीक है जी, thank you. नहीं सर, I have nothing to add. जो शाहिद साहब ने कहा, we are all on the same page, of course, and I just मेरी तरफ से भी जो explanation आ रही थी, that was more for us to understand things in a holistic manner. It's never a one-sided story, as I said earlier as well. आपने PICG की बात की, तो PICG का मैंडेट को मद्देनजर रख के ही चीज कही जा सकती है. We can't ask PICG to be an enforcement agency. And in PICG के लिए जो लिस्ट वगैरह मेंटेन करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, उसमें PICG का कोई बड़ा रोल नहीं है, because that is all that is a requirement of the companies law, which provides कि independent directors का की minimum qualification क्या होगी, क्या what will comprise independence. And it's basically, to me, it's a mindset. I mean, I can be as an independent director on a board of directors, तो PICG को तो नहीं पता चलेगा कि मैं वहां पर उनकी गाड़ी यूज कर रही हूँ या कुछ और यूज कर रही हूँ. My independence gets compromised. So it's all ethical thing as well. So there are, of course, as we rightly all pointed out, that there is a room for improvement everywhere. The challenges that the Pakistan capital market has been, as Shahid Saab also said, not just now but always. हमने crises भी बहुत देखे हैं और हमने reforms भी बहुत देखे हैं, जो हम 2001 से या 2002 से भी अगर मैं compare करूँ, तो we have come a very, very long way. And we must also project this positively, but there is, of course, there's lots to be done. There is a lot to be done. I'm not saying that हम MSCI के index में भी आगे थे, frontier में भी आए, फिर हम लोग फिर emerging में गए, फिर हम frontier में आए, and there were reasons for us, being downgraded as well, and there were reasons for us to be, upgraded as well. So I think the positive side of the story needs to be elaborated as well. But as far as the smaller group is concerned, yourself, Nadeem Saab, Shahid Saab, and others, professionals who are, as you rightly said, KG, are there to actually work on improving this scenario and working on, bringing in those real developments in the capital market. So we can have a separate session. But this time around, I think there was a confusion. This was meant for the students within a different perspective that I didn't see, that coming out. So I think webinars हमें थोड़े से different तरीके से structure करने चाहिए, inshallah, going forward.
But of course, we are here to learn from you, from your experiences. And the SECP, of course, remains always available with respect to consultation, discussions. And this is the prime reason also we have PIDE part of our corporatization wali jo committee hai, and we expect and hope that we will be receiving some valuable feedback from PIDE. So inshallah ta'ala, we'll take this forward, Ji. Thank you. Thank you, Ji. Thank you very much. Thank you, Ji. I think, quite frankly, you're right. Pakistan ke bahut bade issues hain. And I don't know whether we'll ever make it or not. But we'll wait and see kya hota hai. But PIDE ki to baat hai, Ji, quite frankly, PIDE is a very different organization from others. Main baar aapko bata raha hu. PIDE mein graduate students. And these graduate students, as we were told, they also participate in the market and all these things. We are trying to learn. So, inshallah, Musarat Bibi, thank you. Sajjad Sahab, thank you. And Asif Sahab, thank you very much. Thanks for being very informative. Inshallah, we'll keep this going. Hopefully, we will get you again to talk to us on other issues and stuff. Thank you. All the best. Thank you.